गुड मॉर्निंग। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, लाइक इनपुट, लेन, टाइप, इवल, एटसेट्रा। बट इन क्लास 12 वी विल स्टडी फंक्शंस इन डिटेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन? फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? सब प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। वी कैन आल्सो से कि फंक्शंस छोटे छोटे से मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट वी विल टेक प्रिंसिपल, रेट, टाइम, देन वी विल गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, देन वी विल प्रिंट द आउटपुट। सो बेसिकली अगर हम इस कोडिंग को, इन स्टेप्स को वन बाय वन प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ ए function. There are three types of functions in Python. First is built-in function or library function. Second is function defined in module, and third is user defined function. So first of all, library function. Library functions are built-in function which are already built in Python, and we do not need any file to import. For example, type, len, input, etc. We use some library function already in class 11th. Now we will see demo of some most commonly used library function. So we will implement it using Pyroid or Python. The first function is input. So how we use input function? The syntax is input, within inverted commas I will write enter a number. Next line I will write print statement, print a. Now input is a inbuilt function which is used to input a string type value. Now execute it. Now enter a number, I write 12. The output is 12. So in this way we will use the input function. Input is the first inbuilt function. Second is int. If we want, we know that input function will take string type value. Now we will convert a into integer type. So what we will use? A is equal to int a print a. Now it will print 12 and 12. First 12 is string type variable and second 12 is integer type variable. Now again go back. The third function is str. str function क्या करता है? str function जो कन्वर्ट करता है एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है. Now for example, if I write print
inverted commas hello plus 12. Now it will show error because here we are adding string with an integer. It will show error. In that case we have to convert string into integer value into string. So we will use function str12. Now it will execute hello 12. Now hello is a string value and 12 is also a string type value. Next is next function is awill function will return a value into any type. For example, if I write x is equal to awill (45) plus 10. Here 45 and 10 are integer type value, but awill will convert automatically into integer. I am printing the value of x. Execute. Now this is the output. Next function is type. Next inbuilt function is type. Type will return type of data type. Type of a variable. Print statement. Print statement. Now it will execute. See the output. Class int. Here it will return the value of data type of x variable, that is 55. 55 is an integer type variable, so it return integer value.